The first one that we are going to take today is from environment section, plastic waste management rules 2021. These are actually plastic waste management amendment rules 2021. The earlier rules for plastic waste management, they have been amended and certain additions have been made. Okay. So we will be dealing with the plastic waste management. We all know plastic is toxic waste. Plastic is not as toxic as we believe it to be. There's a very certain reason behind that, because plastic is chemically neutral. Okay. It does not decay very fast. But yes, in natural environment it does not decay very fast. It gradually leaches into the ground. Gradually leaches into the ground means कि over a period of time, for example around 500 years, the chemical constituents of the plastic break down and they leach into the soil, thereby contaminating the groundwater, the river streams and the soil as well. Why? Because हम ये सारे pollutants को क्यों पढ़ते हैं, right? 12th 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा, उस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट होल चैप्टर? बिकॉज दैट चैप्टर टेल्स अस कि व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू अफेक्ट अस. ठीक है, व्हाट आर द केमिकल्स दैट वी आर सराउंडेड बाय एंड हाउ आर दीज केमिकल्स गोइंग टू अफेक्ट अस. ठीक है, लाइक हाउ इज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड. ठीक है, why and how is ozone depleted, how is plastic going to affect us. तो plastic is a polymer. ठीक है, polymer are basically repetitive chains of monomers. ठीक है, like polyethylene. तो एथीन एक मोनोमर है, उसका अगर हम बहुत सारे सीरीज चेन्स में बना दें तो वो पॉलीइथीन, पॉली मतलब मल्टीपल, तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन. अंडरस्टूड? तो ये तो बेसिक टर्म है. लेकिन जब ये केमिकल्स या प्लास्टिक इज अ केमिकल, ऑफ कोर्स इज अ केमिकल कंपाउंड, व्हेन इट डिसइंटीग्रेट्स, ओके, what it does is it goes back into the nature. How does it go back into the nature? It goes through environment, it goes through the soil basically. ठीक है, so we are going to study. Moreover, soil pollution was an earlier, like soil pollution has now become a secondary concern. Now what primary concern is the marine eco pollution that is being caused due to what? Plastics. ठीक है, because in the we all know that there's a whole garbage patch in the North Atlantic Ocean. ठीक है, North Atlantic Ocean किसके बीच में? Northern America and of course the Western Europe. ठीक है, तो Northern America और Western Europe के बीच में जो एक region है, ठीक है, that region has now become a garbage patch, and around 60% of the garbage that is contained in the ocean is plastic. Plastic is not only going to harm humans, it is also going to harm other organisms and eventually humans also. Okay, a very important, very interesting and like one of the most multi-dimensional issue that we are going to take today is Tribunal Reform Act 2021. तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे दो वजह हैं. द फर्स्ट वन इज कि गवर्नमेंट और जुडिशरी में एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो गई है विद रिगार्ड टू ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स. ठीक है, बेसिक अगर लेमैन टर्म्स में इसको हम समझने की कोशिश करें तो ट्रिब्यूनल्स आर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज. ठीक है, ये तो स्टोरी सो फार है, वी विल बी गोइंग टू लुक इनटू इट. ठीक है, नाउ GSLV F10 फेलियर, ISRO's EOS 3 मिशन. GSLV का मीनिंग क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट टेक्स ऑफ एंड टेक्स अ सैटेलाइट टू सम ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्च व्हीकल. Why are we studying this? First of all, we will be going to look into the story, what the story has been so far. Recently, Indian Space Research Organization suffered the loss of an important Earth observation satellite. हुआ ये कि इसरो ने लॉन्च किया EOS, बेसिकली GSLV F10 रॉकेट है. GSLV क्या है? लॉन्च व्हीकल का मतलब कुछ नहीं होता, रॉकेट. और EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट.
तो ये सारा काम कैसे करता है? सैटेलाइट को हमें ऑर्बिट पे ले जाना है, उसके लिए वी विल हैव टू काउंटर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए एक स्पेशल इसके वेलोसिटी चाहिए। अब उस इसके वेलोसिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी बॉडी चाहिए, लाइक रॉकेट। Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme, RODTEP. Now, what is remission of duties and taxes? Okay, remission of duties and taxes का meaning होता है to remit. Remit का मतलब to provide for, like it's a kind of subsidy kind of scheme. ठीक है, तो first of all we'll look की स्टोरी क्या है एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज। दिस इज अ क्लिप फ्रॉम द हिंदू। इंडिया लूजेस एक्सपोर्ट इंसेंटिव केस फाइल्ड बाय यूएस एट WTO. इट इज द न्यूज ऑफ November 1, 2019. In November of 2019, India lost a case against United States of America in WTO dispute settlement mechanism under the agreement of subsidies and countervailing measures.